Hello everyone, in today's video we are going to learn about types of sentences. Sentences के चार टाइप होते हैं जिन्हें हम अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू 5 minutes to think about it. Write your answers in the comment section. I will check later. And your question is, do you know what a sentence needs to be complete? Your time is up and your answer is to have a subject, a verb and an object. Here is the first type of sentence, that is declarative. ये पीरियड यानी कि फुल स्टॉप के साथ एंड होता है और इस सेंटेंस को पढ़ के हमें कुछ पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैरी हैज अ कैट. एंड में फुल स्टॉप और इसे पढ़ के हमें पता चल रहा है कि मैरी के पास एक कैट है. एंड योर सेकेंड टाइप इज इम्पेरेटिव. इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस a person tells someone to do something, like give a command. For example, give me that ball. Here, one person is giving another a command. एक person दूसरे person को कुछ particular thing करने के लिए बोल रहा है. Third type is exclamatory. Shows great emotion and end में exclamation mark का use होता है. For example, this day is wonderful. और एंड में आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ पेंसिल क्वेश्चन मार्क. तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा है और एंड जिसका किया है एक क्वेश्चन मार्क के साथ. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. Which type of sentence asks a question and uses a question mark? You have to answer this question in 5 seconds. Write your answers in comment section. Your time is over and the answer is interrogative, because interrogative sentence asks a question and ends with a question mark. Next question is, which type of sentence tells someone to do something? You have 5 minutes to think about it and write your answer in the comment box. I will check later. And your answer is imperative, because imperative sentence gives command, like tells someone to do something. Which type of sentence shows great feeling and uses an exclamation point? Your time starts now. You have 5 seconds. Don't forget this. Your time is over and the answer is exclamatory. Like and share this video and don't forget to subscribe our channel and follow our page. Thank you.